Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have completed our exercise 11.3 regarding three-dimensional geometry, and now we are on the miscellaneous exercise of that unit, that's three-dimensional geometry. And in that miscellaneous exercise we have the first question lies there, and that is we have two lines which is passing through the points. One line is passing through the points O of 0, 0, 0, that's the origin, and A of 2, 1, 1, and the next line is passing through the points B of 3, 5, minus 1 and C of 4, 3, minus 1. These are the two lines which are passing through 2 points, and we have to prove that these two lines are perpendicular to each other. So how we can prove? First we will find the direction ratios of OA, and next we will find the direction ratios of BC. If the sum of products of direction ratios is 0, then the lines must be perpendicular. So directly we will mention here direction ratios of line passing through 0, 0, 0, and that is origin and the point 2, 1, 1 are. So what are the direction ratios of a line which is passing through 2 points? That is directly equal to ordered 3 tuple of x2 minus x1, that is 2 minus 0, y2 minus y1, that's 1 minus 0, z2 minus z1, that's again 1 minus 0. So the direction ratios must be ordered 3 tuple of 2, 1 and 1. So the direction ratios of first line which is passing through the points O of 0, 0, 0 and A of 2, 1, 1 are yes, ordered 3 tuple of 2, 1 and 1. In the similar fashion, we are going to find the direction ratios of line BC which pass through the points 3, 5, minus 1 and 4, 3, minus 1. Also direction ratios of line passing through direction ratios of line. तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स में से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू 3, 5, minus 1 एंड और एक पॉइंट में से पास हो रहा है दैट इज 4, 3, minus 1. तो क्या रहेंगे उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो फिर से दो पॉइंट्स में से पास हो रहे हैं. तो इसके डायरेक्शन होंगे फिर से ऑर्डर्ड 3 टपल ऑफ x2 minus x1, दैट इज 4 minus 3, y2 minus y1, that is 3 minus 5, and z2 minus z1, that's minus 1 plus 1. Minus 1 minus minus 1, that is minus 1 plus 1. So that is minus 1 minus 1. Minus 1 plus 1. Because minus 1 minus 1 is minus 1 plus 1. So the direction ratios must be ordered 3 tuple of 4 minus 3, that is 1. 3 minus 5, that's minus 2, and minus 1 plus 1, that is 0. So we have obtained the direction ratios of both these two lines. Now, if the sum of products of direction ratios is 0, then the lines must be perpendicular. So now we will find that sum of products of direction ratios, that is 2 into 1. Now 2 into 1 plus 1 into minus 2, 1 into minus 2, plus 1 into 0 plus 1 into 0, and that's equal to 2 1s are 2, plus into minus is minus 2 plus 0, and 2 minus 2, that is 0, 0 plus 0 is equal to 0. That is sum of products of direction ratios of lines first and second is 0. That is the sum of products of direction ratios of these lines. Sum of products of direction ratios of these lines is 0. And when the sum of products of direction ratios of the lines is 0, then therefore the lines are perpendicular to each other, or therefore the lines are perpendicular. तो ये दो lines आपस में definitely होंगी perpendicular. So कैसे prove करेंगे when that two lines are perpendicular? Simply we have to find their direction ratios, and if the sum of products of direction ratios is 0, then the lines must be
perpendicular. All about question number first of miscellaneous exercise. Now we are on question number second of this miscellaneous exercise, and in that question number second we have two lines with their given direction cosinus. The direction cosinus of first line are L1, M1, N1, and the direction cosinus of second line are L2, M2, and N2. Then we have to prove that the direction cosinus of third line, which are perpendicular to these lines, are M1, N2 minus M2, N1, N1, L2 minus N2, L1, L1, M2 minus L2, M1. Would be the direction cosinus of that line which are perpendicular to the lines having direction cosinus L1, M1, N1, L2, M2, N2. But these lines are also perpendicular to each other. But we know that the direction cosinus of line or the direction cosinus of a vector are the scalar components of the unit vector. So we will denote these two lines with direction cosinus as capital L1 and capital L2. Let L1 and L2 be the given lines, with direction cosinus ordered 3 tuple of L1, M1, N1 and ordered 3 tuple of L2, M2, N2 respectively. उन लाइन्स को हमने डिनोट किया है कैपिटल L1, कैपिटल L2 से, जिनके डायरेक्शन कोसाइनस दे रखे हैं ordered 3 tuple of L1, M1, N1 and ordered 3 tuple of L2, M2, N2. Therefore, unit vectors which are parallel or which are along the two lines must be, therefore, unit vectors along the direction of unit vectors along the directions of L1 and L2 are पहले यूनिट वेक्टर को सपोज v1 से डिनोट करेंगे एंड दैट मस्ट बी इक्वल सिंस L1, M1, N1 are the direction cosinus. So the direction cosinus of a line or direction cosinus of a vector are the scalar components of unit vector. तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? L1i plus M1j plus N1k and V2 cap must be equal to L2i plus M2j plus N2k. Now we have to prove that the direction cosinus of that vector which is perpendicular to these vectors V1 and V2. What would be the vector which is perpendicular to V1 and V2? Must be V1 cross V2, because cross product of vectors is a vector which is perpendicular to both of them. So therefore V1 cap cross V2 cap is a vector which is perpendicular to V1 cap and V2 cap, and also अगर हम देखेंगे V1 कैप क्रॉस V2 कैप जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो दैट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V1 क्रॉस V2, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ V1 कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ V2 कैप साइन थीटा एन कैप. थीटा क्या होगा इनके बीच में? π/2 obviously, because it is given that lines first and second are perpendicular. So when lines are perpendicular, their parallel vectors are perpendicular, और जब vectors perpendicular हो तो उनके बीच में जो angle होगा that is obviously π/2 into n cap, because L1 is perpendicular to L2. Is that clear? So that's equal to magnitude of V1 cap is 1, magnitude of V2 cap is 1, sin 90 is 1, magnitude of n cap is again 1, and that's again equal to 1. So therefore magnitude of V1 cross V2 is 1. That is V1 cross V2 is a V1 cap cross V2 cap is a unit vector. और जो इस यूनिट वेक्टर के होंगे स्केलर कंपोनेंट, वही उस लाइन के होंगे डायरेक्शन कोसाइनस जो L1 और L2 पे परपेंडिकुलर है. सो देयरफॉर
we are now going to calculate V1 cap cross V2 cap, and that's equal. V1 cap is a vector expressed in terms of components. V2 cap is a vector again expressed in terms of components. When two vectors are expressed in terms of their components, then their cross product is directly equal to determinant of I, J, K in the first row. Scalar components of V1 cap, that is L1, M1, N1 in the second row, and scalar components of V2 cap, that is L2, M2, N2 in the third row. So implies from here we will get V1 cap cross V2 cap must be then equal to, yes, evaluate the determinant. So that is I times M1 N2, M1 N2 minus M2 N1 और N1 M2 माइनस J टाइम्स दूसरी टर्म जो आएगी माइनस आएगी बिकॉज लाइज इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. सो डिलीट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम L1 N2 माइनस N1 L2 plus K times lies in first row third column, delete that L1 M2. So L1 M2 minus M1 L2. This is actually vector, or this can be further written as implies V1 cap cross V2 cap, cross product of two unit vectors must be M1 N2 minus N1 M2 into I. माइनस से मल्टीपल कर दो तो बनेगा प्लस टाइम्स, माइनस से मल्टीपल कर दो या इन दो टर्म्स में से माइनस को कॉमन लेके आओ, वो माइनस और ये माइनस बाहर का माइनस बनेगा प्लस, लेकिन माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा, जो माइनस है वो प्लस बनेगा, जो प्लस है वो माइनस बनेगा. सो ये बनेगा प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 इंटू J प्लस L1 M2 माइनस M1 L2 इंटू K. तो ये बन गया एक्चुअली V1 cap cross V2 cap. That is a vector which is perpendicular to both V1 and V2. But V1 and V2 are two vectors which are parallel to the lines L1 and L2. So means V1 cross V2 is again a vector which is perpendicular to L1 and L2. So ऐसी लाइन, तो ये V1 cross V2 एक ऐसा यूनिट वेक्टर बन रहा है जिसके डायरेक्शन कोसाइनस जो है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज जो है, जिसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं M1 N2 minus N1 M2, L1 L2 minus L1 N2 and L1 M2 minus M1 L2. But direction cosines, the direction ratios, the scalar components of a unit vector are actually the direction cosines of the vector or the line. तो ये V1 cross V2 ये रहेगा parallel to the line which is perpendicular to line first and second. तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइनस फिर क्या बनेंगे, therefore direction cosinus, therefore direction cosinus of required line, और ऐसे लिखेंगे therefore required direction cosinus of the line perpendicular to L1 and L2 are. तो क्या रहेंगे उसके डायरेक्शन कोसाइनस, जो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज. उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, V1 कैप क्रॉस V2 कैप. तो इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, सो डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे M1 N2 माइनस N1 M2 कमा N1 L2 माइनस L1 N2 कमा L1 M2 माइनस M1 L2. तो ये बनेंगे जिगर रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन. तो यही प्रूव करना था कि डायरेक्शन कोसाइन यही होंगे M1 N2 माइनस M2 N1 L1 L2 N1 L2 माइनस L1 N2 माइनस L1 N2 L1 M2 माइनस L2 M1 माइनस L2 M1 are the required direction cosines of that line which is perpendicular to line first and line second. So all about question number 2 of miscellaneous exercise. Now we are on question number 3 of that miscellaneous exercise, and in that question number 3 we have again two lines.
line first and line second with their respective direction ratios as A, B, C and B minus C, C minus A minus B. Then we have to locate the angle between these two lines. So line first के direction ratio ABC है, line second के direction ratio B minus C, C minus A minus B है और हमें इन दो lines के बीच में angle चाहिए. So that angle is given by the formula cos theta must be equal to, yes, A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 divided by square root of A1 square plus A2 square plus A3 square into square root of B1 square plus B2 square plus B3 square. This is actually the expression for calculating the angle between two lines when their direction ratios are given. So सबसे पहले यहां पे मेंशन कर देंगे let L1 and L2 be the given lines. Let L1 and L2 be the given lines with their direction ratios as ordered three tuple of A, B, C and ordered three tuple of B minus C, C minus A minus B. तो ये है जिगरा इन दो लाइन्स के गिवन डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोज और हमें इनके बीच में एंगल चाहिए. तो इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. नाउ इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल, क्योंकि लाइन्स के बीच में दो एंगल होंगे, एक थीटा दूसरा पाई माइनस थीटा, तो इसलिए हम एक्यूट ले रहे हैं. तो उस समय जो वैल्यू आएगा दैट इज पॉजिटिव, तो प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे, ओनली प्लस की बात करेंगे. नाउ इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 and L2, देन वी हैव, तो इनके बीच में एंगल किसके बराबर आएगा? कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर. So implies cos theta must be then equal to what are A1, A2 and A3 direction ratios of first line, what are B1, B2 and B3 direction ratios of second line. So put the values. A1 के बदले A, so A into B1 के बदले B minus C, so B minus C plus A2, A2 के बदले B, so B into, instead of B2 we have C minus A, so C minus A plus A3 B3, instead of A3 we have C and instead of this B3 we have A minus B, divided by square root of, yes, A1 square plus A2 square plus A3 square means A square plus B square plus C square, so that is A square plus B square plus C square into square root of B1 square plus B2 square plus B3 square. So instead of B1 B2 B3 we have B minus C square plus C minus A square plus A minus B whole square. So implies cos theta is then equal to, yes, A into B minus C, that is AB minus AC plus B into C minus A, that is BC minus AB plus C into A, that is CA, C into minus B, that is minus BC divided by square root of same thing, that is square root of A square plus B square plus C square into square root of B minus C square plus C minus A square plus A minus B whole square. So implies cos theta is then equal to, yes, plus AB minus AB will cancel out, minus AC plus AC will cancel out, plus BC minus BC will cancel out. So remaining result is 0. 0 divided by anything is 0. So implies cos theta is equal to, cos कहां पे होता है 0? Pi by 2. So cos pi by 2
operating cos inverse on both sides because pi by 2 is the principal value. So there will remain theta is equal to pi divided by 2. तो इनके बीच में जो एंगल होगा that is pi divided by 2 means the line is R. That is the line is first and second. That is the line is L1 and L2 are perpendicular. तो इनके बीच में, इन लाइन्स के बीच में जिन लाइन्स के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी और बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी है, इन लाइन्स के बीच में जो एंगल होगा थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 2. एंड इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स व्हिच इज पाई बाई 2, देन ऑब्वियसली द लाइन्स मस्ट बी perpendicular to each other. So that was all about question number 3 of the miscellaneous exercise. Now we are on question number 4 of the miscellaneous exercise, and in that question number 4 we have to actually find the equation of that line which is parallel to x-axis and that line is passing through the origin. So हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो x-axis यानी वो रिक्वायर्ड लाइन और x-axis आपस में पैरेलल है और वो लाइन जो है that passes through the origin. Since it passes through the origin, passes through a point, so we can locate its equation in one point form. लेकिन सबसे पहले जो ये लाइन रिक्वायर्ड लाइन और एक्स एक्सिस आपस में पैरेलल हैं, तो एक्स एक्सिस के पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर एक्स एक्सिस और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो चूंकि आपस में पैरेलल है तो सेम होंगे, फिर डायरेक्शन रेशियो आएंगे तो आल्सो इट पासेस थ्रू द पॉइंट, सो वी कैन लोकेट इट एज इक्वेशन. तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस आर. क्योंकि एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्स डैश और रिक्वायर्ड लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है और रिक्वायर्ड लाइन जो है पास हो रहा है थ्रू द पॉइंट 0 0 0. तो इसकी इक्वेशन होती है यस x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b एंड दैट्स इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट. लेकिन a हमें चाहिए a b c दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, वो हमें नहीं मालूम. लेकिन ये लाइन और x एक्सिस आपस में पैरेलल है तो जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो मिलेंगे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो. आल्सो इट पासेस थ्रू द पॉइंट, सो वी कैन लोकेट इट एज इक्वेशन इन वन पॉइंट फॉर्म. तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस आर. यस, ऑर्डर्ड फ्री टपल ऑफ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? एक्स एक्सिस में जितने भी सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, उनका वाई कोऑर्डिनेट भी 0, जेड कोऑर्डिनेट भी 0, इसलिए डायरेक्शन रेशियो बनेंगे 1 0 0. Because all the points which are lying on x-axis have their x coordinate, but y coordinate 0 and z coordinate 0, right? So इसके direction ratio क्या बनेंगे? 1 0 0. Now, given that the required line is parallel to x-axis. Now given that the required line is parallel to x-axis, जब required line और x-axis आपस में parallel है, so parallel lines have same or proportional direction ratios. Therefore, direction ratios of required line. Therefore, direction ratios of required line. तो रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ अगेन 1 0 0. आल्सो इट पासेस थ्रू ये पास हो रहा है किसमें से? ऑरिजिन 0 0 0. देयरफॉर इट्स इक्वेशन इन वन पॉइंट फॉर्म इज Therefore, its equation in one point form is क्या होती है? one point form of equation of line x minus x1 by a equal to y minus y1 by b and that's equal to z minus z1 divided by c, which implies x minus x1 is the x coordinate of the point through which it passes 0 divided by a is the first direction ratio that is 1
is equal to y minus y1, that's again 0, divided by b, the second direction ratio, that is 0, is equal to z minus 0 divided by 0. So x minus 0 by 1 is equal to y minus 0 by 0, and that's equal to z minus 0 divided by 0 would be the equation of that line which is parallel to x-axis and is passing through the origin. So it will become x divided by 1 is equal to some constant, means suppose t के बराबर ले लेंगे, so x is equal to 1 जो आएगी, suppose t का वैल्यू फिर 1 रखेंगे तो इसकी इक्वेशन फिर नटशेल में क्या बनेगी, x is equal to 1, y is equal to 0, z is equal to 0 would be the equation of that line which is passing through origin and parallel to x-axis. So all about question number 4 of the miscellaneous exercise. Now we are on question number 5 of the miscellaneous exercise, and in that question number 5 we have 4 given points. A with its coordinates has 1, 2, 3, B with its coordinates has 4, 5, 7, C with its coordinates has minus 4, 3, minus 6, D with its coordinates has 2, 9 and 2. Then we have to find the angle between lines AB and CD. तो AB line और CD line जो बनेगी, हमें इन दो लाइन्स के बीच में एंगल चाहिए. So angle is given by the formula again, cos theta is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 divided by square root of a1 square plus a2 square plus a3 square into square root of b1 square plus b2 square plus b3 square, where a1 a2 a3 are the direction ratios of ab and b1 b2 b3 are the direction ratios of cd. So सबसे पहले हम ab और cd के निकालेंगे direction ratios. So therefore direction ratios of line ABR. तो लाइन AB के डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे, क्या होते हैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जिसके दो एंड पॉइंट्स दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स, x2 x1, y2 y1, z2 z1. तो AB के डायरेक्शन रेशियो 4 1, 5 2 and 7 3. And that's equal to order 3 tupla. 4 minus 1 is 3, 5 minus 2 is again 3, 7 minus 3 is 4. So the direction ratios of AB are 3, 3 and 4. Similarly, we can calculate the direction ratios of CD also. Direction ratios of CDR. तो CD के डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे, अगेन ऑर्डर्ड 3 tuple of yes x2 minus x1, that is 2 minus 4 which is 2 plus 4. Is that clear? 9 minus 3, so 9 minus 3 and 2 minus 6, that is 2 plus 6. And that's equal to ordered 3 tuple of 2 plus 4, that is 6. 9 minus 3, that's again 6, and 2 plus 6, that is 8. So the direction ratios of AB are 3, 3, 4. The direction ratios of CD are 6, 6 and 8. 3 divided by 6, 1 by 2. 3 divided by 6, 1 by 2. 4 divided by 8, 1 by 2. Means the direction ratios of AB and CD are proportional. And when the direction ratios of AB and CD are proportional, they must be parallel. When they are parallel, the angle between them is either 0 or pi. Is that clear? So since 3 divided by 6 must be equal to 3 divided by 6 must be equal to 4 divided by 8, and that's equal to the common ratio 1 divided by 2. तो इसका क्या मतलब, that is direction ratios of AB and CD are proportional. The direction ratios of AB and CD are proportional. जब दो लाइन्स के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हैं तो therefore AB and CD are parallel. तो ये लाइन्स जो हैं डेफिनेटली पैरेलल होंगी. That is the angle between them. तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? The angle between them is 0 or pi. तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो या 0 होगा
या पाई होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में यह एंगल 0 होता है या पाई होता है. इज इट क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज. Now we are on question number 6 of the same miscellaneous exercise, and in that question number 6 we have the equations of two given lines, x minus 1 divided by minus 3, and that's equal to y minus 2 divided by 2k, and that's equal to z minus 3 divided by 2, and the equation of second line in Cartesian form is x minus 1 divided by 3k is equal to y minus 1 divided by 1, and that's equal to z minus 6 divided by minus 5. So both the equations are of the form x minus x1 by a equal to y minus y1 by b, and that's equal to z minus z1 by c. While a, b, c are the direction ratios of vector parallel to the line, or we can say that they are the direction ratios of the line. So the direction ratios of first line are minus 3, 2k, 2, and the direction ratios of second line are 3k, 1 and minus 5. Now it is given that these two lines are perpendicular and we need to find the value of this unknown k. हमें इस unknown k का वैल्यू चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका क्या मतलब, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज मस्ट बी 0. तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज 0 के बराबर ले लो, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, यहां पे मेंशन कर देंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन फर्स्ट आर, क्या होंगे लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियोज, ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ यस -3 2k 2 -3 2k 2, because the lines are of the form x minus x1 by a equal to y minus y1 by b, and that's equal to z minus z1 divided by c. Similarly, direction ratios of line second are, line second के डायरेक्शन रेशियो क्या है, that is again in the form of x minus x1 by a equal to y minus y1 by b, and that's equal to z minus z1 by c. तो क्या बनेंगे डायरेक्शन रेशियो 3k 1 and minus 5. So 3k 1 and minus 5. Now it is given that these two lines are perpendicular. Now given that line is first and second are perpendicular. जब दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो डेफिनेटली सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज 0 के बराबर होगा. सो देयरफॉर -3 into 3k plus 2k into 1 plus 2 into minus 5 must be equal to 0, because when two lines are perpendicular the sum of products of their direction ratios is obviously equal to 0. So implies this can be written as -3 into 3k, that's minus 9k, 2k into 1, that is plus 2k, and plus into minus is minus 2 5s are 10, and that's equal to 0, which further implies that minus 9k plus 2k is minus 7k, and minus 10 उस साइड में बनेगा plus 10. So implies k must be equal to minus 10 divided by 7. तो k का वैल्यू आ रहा है minus 10 divided by 7, such that the given lines first and second are perpendicular to each other. So all about question number 6 of the miscellaneous exercise. Now we are on question number 7 of the miscellaneous exercise, and that's very much important as far your examination is concerned. And in that question you have the given equation of a plane. The equation of given plane is r dot I plus 2j minus k plus 9 is equal to 0. आपके पास एक गिवन प्लेन है जिसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में r dot I plus 2j minus 5k plus 9 equal to 0 है, and a line is drawn perpendicular to this plane. एक लाइन को डाला जाता है perpendicular to the plane, और वो लाइन पास हो रहा है through the point 1 2 3, and you need to calculate the equation of that line. Since that line passes through the point 1 2 3, तो हम उसकी इक्वेशन निकाल पाएंगे इन वन पॉइंट फॉर्म, लेकिन हमें चाहिए इसकी वेक्टर फॉर्म. उसको कार्टेशियन फॉर्म को हम फिर रिड्यूस कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, लेकिन सबसे पहले ये लाइन जो है ये पास हो रही है थ्रू द पॉइंट 1 2 3, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल पाएंगे बाय
वन पॉइंट फॉर्म, लेकिन वन पॉइंट फॉर्म क्या होती है, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी एंड दैट्स इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c, व्हाइल ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, लेकिन वो नहीं दे रखे हैं। तो वो डायरेक्शन रेशियोज हम कहां से लेके आएंगे? देखो स्टूडेंट्स, इस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी? r वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk। अब डॉट प्रोडक्ट कर दो, x इंटू वन दैट इज x प्लस y इंटू टू दैट इज 2y प्लस z इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 5z एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इस प्लेन की बनेगी वेक्टर इक्वेशन। तो जब ये इस प्लेन की बनेगी वेक्टर इक्वेशन, इस प्लेन के एटीट्यूड नंबर क्या होंगे? ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ ए बी सी दैट इज 1 2 माइनस 5। तो 1 2 माइनस 5 इस प्लेन के बनेंगे एटीट्यूड नंबर्स। पर व्हाट आर एटीट्यूड नंबर्स? एटीट्यूड नंबर्स आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी नॉर्मल टू द प्लेन। जो नॉर्मल इस प्लेन पे होगा उसके एटीट्यूड नंबर जो बनेंगे दैट आर ऑब्वियसली 1 2 माइनस 5। अब प्लेन का नॉर्मल और वो रिक्वायर्ड लाइन आपस में पैरेलल हैं। जब ये आपस में पैरेलल हैं तो इसके भी डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ 1 2 माइनस 5। तो मिले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एंड ऑल्सो द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले मेंशन कर रखा है द इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज दिस, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज, the Cartesian equation of this plane is, इस प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी? यस, x इंटू वन दैट इज x प्लस y इंटू टू दैट इज 2y प्लस z इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 5z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वी विल कीप दैट प्लेन एज प्लेन नंबर फर्स्ट। इस प्लेन के एटीट्यूड नंबर क्या होंगे? द एटीट्यूड नंबर्स, the attitude numbers of this plane are, इस प्लेन के एटीट्यूड नंबर क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ 1 2 माइनस 5 दैट इज, लेकिन एटीट्यूड नंबर एक्चुअली क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन फर्स्ट। टू प्लेन फर्स्ट आर क्या होंगे उसके डायरेक्शन रेशियो? ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ 1 2 माइनस 5। लेकिन अगर हम लाइन डालेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक लाइन अगर हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन डालेंगे, वो प्लेन का जो अपना नॉर्मल होगा वो लाइन और वो नॉर्मल आपस में पैरेलल होंगे, और जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तो दे हैव सेम और प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज। नाउ गिवन दैट, now given that the required line, is perpendicular to plane first, so it must be, जब ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो इसके नॉर्मल, इसका नॉर्मल और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे। सो इट मस्ट बी नॉर्मल, इट मस्ट बी पैरेलल to its normal. It must be parallel to its normal. नॉर्मल के एटीट्यूड नंबर क्या है? 1 2 माइनस 5। तो लाइन के भी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 2 माइनस 5। तो लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे? Therefore डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो बनेंगे यही 1 2 माइनस 5। ऑल्सो रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, ऑल्सो इट पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट में पास हो रहा है? 1 2 3। Therefore its equation in one point form is, therefore its equation in one point form is, तो क्या रहेगी लाइन की इक्वेशन वन पॉइंट फॉर्म में?
x minus x1 by a equal to y minus y1 by b, and that's equal to z minus z1 divided by c, which implies x minus x1 is the x coordinate of the point through which it passes, that is 1, divided by a is the first direction ratio, that is again 1, and that's equal y minus y1, that is y minus the y coordinate of a point, that is 2, divided by second direction ratio, that is again 2, is equal to z minus z1, that is z minus 3, divided by the third direction ratio, that is minus 5. So x minus 1 divided by 1 is equal to y minus 2 divided by 2, and that's equal to z minus, yes, minus 3 divided by minus 5 would be the required Cartesian equation of the line, would be the Cartesian equation of the required line. लेकिन हमें इस कार्टेशियन इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में. तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है 1 पॉइंट फॉर्म में? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स वी वेक्टर. Well, r vector is the position vector of any point. A vector is the position vector of given point through which it passes. कौन से पॉइंट में पास हो रहा है? 1 2 3. तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? A वेक्टर के बदले आएगा I प्लस 2j प्लस 3k, एंड V वेक्टर क्या होता है? जो वो वेक्टर जो इस लाइन पे पैरेलल होता है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 2 एंड माइनस 5. तो V वेक्टर किसके बराबर आएगा? I प्लस 2j माइनस 5k. The vector equation of this line is the vector equation of this line is, तो इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट थ्रू विच इट पासेस. कौन से पॉइंट में पास हो रहा है? 1 2 3. तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? I प्लस 2j प्लस 3k प्लस t टाइम्स या लेमडा टाइम्स लिख दो इनटू द वेक्टर v. लेकिन वेक्टर v क्या होता है? पैरेलल टू द लाइन, तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 2 माइनस 5. वेक्टर क्या बनेगा? माइनस i प्लस 2j माइनस 5k, नॉट माइनस i प्लस 2j, so I plus 2j minus 5k. So r vector is equal to I plus 2j plus 3k plus lambda times I plus 2j minus 5k would be the equation of that line which is passing through the point 1 2 3 and perpendicular to the plane r dot I plus 2j minus 5k plus 9 is equal to 0. All about question number 7 of the miscellaneous exercise. Now question number 8 of this miscellaneous exercise is just similar to question number 7. Question number 7 में लाइन परपेंडिकुलर थी टू द प्लेन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में लाइन है पैरेलल टू द प्लेन. तो व्हेन इट इज पैरेलल टू द प्लेन इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, और जब आपको नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो 0 के बराबर होगा. तो मींस आपको मिलेंगे नॉर्मल उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, एंड आल्सो इट पासेस थ्रू द पॉइंट, सो यू कैन इजीली लोकेट इट एज इक्वेशन. तो क्वेश्चन नंबर 8 is a bit similar to question number 7, and you can do that yourself. Now there are some more questions of that miscellaneous exercise, but they will be done in the next class.